Hello, good evening everyone. Am I audible to you all here? Good evening. Please let me know in the chat box if I am audible to you, right? Yes. So in the last lecture, we have tried to solve some questions based on the right circular cylinder, right? So in today's session, we'll just go with the next type. But before that, we'll just go through the last two questions based on the last type, which is nothing but related to right circular cylinder. Okay? So here we have the first question. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of a graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of a graphite is 1 mm. If the length of a pencil is 14 centimeter, then find the volume of a wood and that of the graphite. ओके सो क्वेश्चन का टाइप सबसे पहले देखते हैं उसके बाद हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं देन ऑब्वियसली जैसे आपको बोला गया था इट इज रिलेटेड टू राइट सर्कुलर कोन सो अगर वॉल्यूम फाइंड आउट क्यों करना है आपको बिकॉज ये कुछ वाला आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है राइट सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस वी नो दैट volume of a cylinder is nothing but pi r square h correct. So volume of a graphite cylinder equals to जो भी को मिलेगा इधर pi r square आपको करना है use. But we know that pi is nothing but 22/7. So what will be radius here? Radius of the cylinder, radius of a graphite cylinder, which is given as a 1/10 axis of it. So 20 get cancelled and you will get the volume of a graphite cylinder as a 0.1 cubic centimeter. Also, wood is a part of that pencil excluding part, right? Hence, volume of a wood अगर आपको करना है find that it is nothing but volume of a pencil minus volume of a graphite. So, volume of a pencil अगर आपको करनी है फाइंड तो सिर्फ अगेन रेडियस ऑफ अ पेंसिल चेक करो लेंथ ऑफ अ पेंसिल चेक करो you will get volume of the pencil is nothing but pi r square into h but radius of the pencil is given at 7/20 so r square it means that 7/20 into 7/20 into h so h is nothing but length of a pencil which is given as a 40 so 7 will get cancelled अगर आप ये करते हो calculate then you will get its value as that volume of a pencil can be written as 5.39 cubic centimeter. Hence, the volume of a wood is nothing but this one. Okay. So, we have the new question which is the last of this type that is right circular cylinder. After this question, we'll start with the right circular cone. So, a cylindrical cone of a diameter 30 centimeter is bored through a cuboid wooden block with one. Find the volume of the object so formed. मतलब ये रहेगा आपके पास कुछ cuboid consider cubizal आपको क्या कंसीडर करना है सिलेंड्रिकल होल आपको करना था फॉर्म ऑफ अ डायमीटर 30 सेंटीमीटर गेटिंग दिस सो ये जो भी कुछ आपको सर्कल मिलने वाला है इट इज ऑफ अ शेप ऑफ सिलेंड्रिकल राइट इसके लिए डायमीटर अगर आपका रहता है 30 सेंटीमीटर का तो ऑब्वियसली आप इसके लिए फाइंड आउट कर सकते हो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सो फॉर्म मतलब ये करने के बाद जो आपको ऑब्जेक्ट मिलने वाला है उसका आपको करना था वॉल्यूम फाइंड बट इट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक माइनस ये जो भी कुछ आपने कंसिडर किया था ना राइट बोर्ड सो उसका जो भी वॉल्यूम रहेगा दैट वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल होल आपको करना पड़ेगा उसमें से माइनस दैट्स इट So side of a cubical wooden block is nothing but 1 meter which is equals to 100 centimeter. So what is the actual formula for this? L cube, right?
So volume of a cubical wood, one is nothing but 1 meter, so it will be 100 cubic centimeter, because आपको 1 मीटर दिया था, मीटर आप कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में, so it will be 100 cube, which is nothing but 10, 1 पे आपको टोटल 10 टाइम्स 0 लिखना है। ये बन जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। इसमें से आपको सिलेंड्रिकल होल जो आप फॉर्म करने वाले हो उसका जो भी वॉल्यूम रहेगा वो करना था सबट्रैक्ट, बट वॉल्यूम इज नथिंग बट बेस से जो भी कुछ रहता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, और हाइट क्या रहेगी ऑब्वियस, क्या जो भी क्यूबॉइड की हाइट रहेगी इट विल बी हाइट ऑफ दैट सिलेंडर। इसके लिए अगर डायमीटर आपके पास है तो रेडियस आप फॉर्म कर सकते हो। हाइट ऑफ a cylinder is same as the height of a cuboid, which is nothing but 1 meter, which can be written as 100 centimeter, and diameter of a cylindrical hole is 30 centimeter, hence radius will be half of it, which is nothing but 50. So we know that if we have to find the volume, volume is nothing but जो भी कुछ आपके पास बेस area of the base into height, that is pi r square h. So we are instructed to put pi as a 3.14. Hence 3.14 into r square, that is 15 into 50 into h is nothing but 100 centimeters. So 3.14 into 100 will be 314, and 15 square is nothing but 225. So after calculating this, you will get this volume as a 70,650 cubic centimeter. Okay, done. तो आपको फाइनल वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, ये कुछ आपको मिल रहा था, माइनस ऑफ दिस. सो जस्ट कंसिडर what it will be, and after the simplification you will get the final answer, that is 10 lakh minus 70,650 cubic centimeter. So after calculating you will get its value as a 9,29,350. Are you getting this one? ये क्वेश्चन किस टाइप का है ये समझो, अगर क्लियर हो रहा था क्वेश्चन देख के क्या करना है, वॉल्यूम भी क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया था। सेकंड केस ये जो अब वाला केस था, वी आर जस्ट ट्राइंग टू यूजिंग दिस वन. ओके, गेटिंग दिस वन, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? इट इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, दैट इज जो भी हम सिलेंडर कंसीडर कर रहे थे ना उसमें से. सो नाउ विल स्टार्ट विथ द न्यू, which is nothing but right circular cone. सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हम काम के लिए कंसीडर किया था क्यूब, के बाद हमने क्यूब के लिए दिया, उसके बाद आप पूछिए राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में देख रहे थे, करेक्ट? सो नाउ वी स्टार्ट विद द राइट सर्कुलर कोन. अगेन इसके लिए आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करने होंगे, व्हाट विल बी कर्व सरफेस एरिया एंड व्हाट विल बी टोटल सरफेस एरिया, एंड ऑब्वियसली जो भी रहेगा वो वाला केस, दैट इज वॉल्यूम. सो फर्स्ट केस आपके पास ये है, दैट हाउ मेनी फेसेस वी कैन सी फॉर दिस राइट सर्कुलर कोन. फर्स्ट फेस रहेगा आपका कुछ ऐसा, एंड सेकेंड फेस इज नथिंग बट जो भी कुछ आपको कर्व एरिया मिल रहा था वो केस. ओके, समझ में आ रहा है इतना, आपको क्लियर हो रहा है ये पूरा? देन सो देयर विल बी टोटल टू फेसेस. अगर फेसेस रहते हैं तो सर्कुलर फेसेस, इसमें से सर्कुलर फेसेस इज नथिंग बट देयर विल बी ओनली वन सर्कुलर फेस, एंड सेकेंड वन विल बी द कर्व्ड फेस. Okay, so we'll consider that r will be the radius of that circular face and h will be height of the cone. Height of the cone मतलब cone के लिए तो आपको लास्ट पॉइंट मिल रहा था, वहां से आप इसके लिए जो भी आपका सेंटर रहेगा इस सर्कल का वो कर रहे हो जब इट विल बी h, बट वी नो दैट ऑब्वियसली ये आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर, एंड जब भी परपेंडिकुलर को मिलता है तो उस ट्रायंगल को आप बोलते हो राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके लिए आप यूज कर सकते हो पाइथागोरस का, करेक्ट? बिकॉज कई क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द वैल्यू ऑफ h, कभी कभी आपको ये वैल्यू देते हैं विच इज नथिंग बट लेंथ, या फिर r मिसिंग रहेगा and you may have the values of h and l. So whatever it is, there are total three quantities.
बट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर आपके पास दो वैल्यूज रहती तो रिमेनिंग वन का वैल्यू आप इजीली फॉर्म कर सकते हो. कई बार क्वेश्चन में एज ए टिप में आपको ये दिया जाता है. ठीक है. सो दैट द लेंथ ऑफ स्लैंट लाइन विल बी एल. सो हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं. ऑब्वियसली फर्स्ट वाला आपका क्या रहेगा, दिस वन, राइट एंगल ट्रायंगल जिसके बारे में हम बोल रहे थे. सो व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन एच आर एंड एल. Using Pythagoras theorem, we can say that hypotenuse, which is nothing but side opposite to 90 degree, hypotenuse square is equal to first side square plus second side square, right? And what will be curved surface area? Curved surface area के लिए आपको formula मिलेगा pi into r into l, that is pi into r into l. ये जो slant line आप consider करने वाले हैं, it will be your curved surface area. And total surface area is nothing but curved surface area plus area of the circular face. But circle के लिए क्या रहता है आपका area? Pi r square, right? So we can say that total surface area of a right circular cone is given as pi r l plus pi r square. So you can take that pi and r common from it. So you will get the total surface area as a pi r into r plus l. Okay, done. Then next one, volume. Volume is nothing but what will be capacity of that cone. मतलब आप कुछ अगर फील करते हो तो कितना क्वांटिटी रहेगा, ये टाइप के क्वेश्चंस will be based on volume. So volume के लिए आपको करना क्या था, हम कंसीडर क्या कर रहे थे, देखो ये जो आपको मिलेगा कुछ कोण, ये आप कंसीडर कर सकते हो यूजिंग दैट स्टफिंग्स, राइट. हेंस वॉल्यूम इज गिवन एज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच. ये आपने कहा देखा था पाई आर स्क्वायर एच. pi r square h is nothing but volume of that cylinder, right? Right. Cylinder. But अगर आपको कोण के लिए देखना है तो सिर्फ आपको ये याद रखना है that volume of a right circular cone is given as 1/3 of pi r square h. So just using these three formulas, actually the fourth one, which is nothing but the Pythagoras one. So using just four formulas, we'll try to solve more questions based on this. So first question clearly आपको बोला गया था, you have to find the total surface area of a cone if its slant height is given as 21 meters. Slant height मतलब directly आपको L का वैल्यू बोला गया था, correct? And diameter of the base will be 24 meter. अगर आपके पास रहता है मीटर तो क्या आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, करेक्ट. कैसे मिलेगी फिर, हाफ ऑफ, करेक्ट. फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास है, टोटल सरफेस एरिया के लिए कुछ एल का वैल्यू मिलना चाहिए, आर का वैल्यू मिलना चाहिए, पाई वैसे भी आप कंसीडर करते हो. So r is nothing but diameter upon 2 which is equal to 12 meter and को यूज करना है फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज नथिंग बट पाई इनटू आर इनटू एल प्लस आर. अगर आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पूछेंगे तो उसके लिए आप यूज करोगे पाई आर एल, राइट. बट टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया प्लस जो भी इसमें आपको मिलने वाला था सर्क्यूलर फेस, उसका भी एरिया आपको करना है उसमें ऐड. So now you have a value of L, R and formula जो आपको यूज करना था, that is pi r into L plus R. So 22 upon 7 into R is nothing but 12 into bracket L plus R, that is 21 plus 12. I think you can calculate, right? मुझे झट से वही आंसर क्या रहेगा मिल सकता है. Okay, ये तो मुझे मिल रहा था. Just try to calculate. For the first few questions आपको एक्चुअल में क्या करना है, कब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, या इस पे फोकस करो. कैलकुलेशंस तो आप इजीली कर सकते हो बट चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी. ओके, चीटिंग नहीं करनी है आपको, कैलसी नहीं यूज करना है इस केस में. Done with this question? Let me know in the chat box so that we can go for the next question. Are you getting this one?
Now we have the next question as, yes, here we have the next question. A right triangle ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter and 30 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Then find the volume of the solid so obtained. ये जो 12 सेंटीमीटर का आपका साइड है वो आप रखोगे फिक्स, बट ये जो आपका पार्ट था वो आप करोगे रिवॉल्व। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, आफ्टर दिस रिवॉल्यूशन आपको कुछ ये 3D डायग्राम मिल जाएगा, करेक्ट? इस टाइप से, so you will get types of which is nothing but right circular cone। तो ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा था वो कौन था? अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो कौन के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है आपका? 1/3 ऑफ आर एच। देखो फिर ऑब्वियसली 12 सेंटीमीटर क्या रहेगा? 12 सेंटीमीटर इज नथिंग बट हाइट। 13 क्या रहेगी आपकी? 13 इज नथिंग बट स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। एंड पहले से आपको रेडियस तो पता है। See, on revolving the right angled track ABC, you will get that cone. So जो भी tend हुआ है आपका solid, it is nothing but cone, right circular cone. So right circular cone के लिए volume का क्या रहता है formula? 1/3 of pi r square h. So values करते हैं put, r is given as 5, so 5 square into 12. कैलकुलेट करने की कोशिश करो। That's it. Next part आपको क्या करना है? You just have to put the value of pi. So pi का वैल्यू पुट करा है, मुझे चैट बॉक्स में बोलो आपको आंसर क्या मिलता है। I want your answer in the chat box, okay? Just pi की वैल्यू पुट करो, that's it. Easily मिल जाएगा। Yes. Okay. Good. So volume of a solid obtained will be that pi cubic centimeter, and we know that pi is nothing but 3.1. So it will be 340. Okay. Again, there is one more basic type of question. ये सारे basic question करने के बाद हम कुछ twist में जाएंगे, ठीक है? Now, curved surface area of a cone is 308 centimeter square, and its slant height, which is nothing but L, is 14 centimeter. Then you have to find what will be radius of the base and what will be total surface area of the cone। अगर आपको रेडियस मिल जाता है तो सर्कुलर जो आप करेगा उसके लिए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। So using the given formation, you have curved surface area which is nothing but 308 square centimeter, but and slant height which is nothing but L is given as a 14 centimeter. But we know that curved surface area of a cone is given as a pi r L, right? So we equate pi r L with 308. So the next, yes, we just have to put the value of L as the 40 and pi is nothing but 22 upon 7. So 22 upon 7 into r into 14 will be 308. Correct? So 7 1 7 2 consider correct. Value of r is nothing but 308 into 7 upon 14. So 2 ones are 2 is and we know that 22 sevens are is 154. So you will get value of r is a 7 centimeter. ये जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है, आप इजीली सॉल्व भी कर पाओगे, ठीक है? इस केस में आपको कर्व सर्फेस दिया था, यूजिंग इट आपने रेडियस फाइंड आउट किया, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा था, वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट? नाउ सेकंड के लिए क्या फाइंड आउट करना है आपको? अगर एक बार आपको रेडियस ऑफ द बेस मिल जाता है, then we just have to use the formula for total surface area, but total surface area is nothing but
उसके लिए आपको क्या चाहिए, आर का वैल्यू चाहिए, देन एल का वैल्यू चाहिए, पाई जो पहले से आपके पास है. सो जस्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला पाई इंटू आर इंटू एल प्लस आर, वेर आर जो अभी हमने फाइंड आउट किया था विच इज नथिंग बट 7 सेंटीमीटर एंड एल विल बी 14 सेंटीमीटर. सो जस्ट वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर क्या मिलता है बोलो मुझे. आई वांट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. ओके, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है. 7 7 तो डायरेक्टली आपका कट जाएगा. सो सिर्फ आपको 22 इंटू 21 करना है फाइन. सो व्हाट विल बी योर आंसर, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. एंड चीटिंग नहीं करनी है, कैलकुलेशन करके बोलो आंसर क्या रहेगा. कि अगर समझ में आ रहा है बोलो. You might have get calculation as 22 into 21, which is nothing but 4. Rajesh, good, very good, good one. So सिर्फ राजेश ने क्लियर किया. अच्छा, fine. So total surface area of the core will be 460. Good. चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी. ओके, कैलकुलेशन आपको खुद से करना है. So total surface area of the core will be 462 square centimeter. जैसे मैंने आपको बोला ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप के हैं. हम थोड़ा 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 करते हैं. देखो, the best radius of two right circular cones of the same height are in the ratio 2:3. मीन्स आपको क्या R1 as to R2 या फिर R1 upon R2 का वैल्यू आपको दिया था 2/3 and the case is that they are of the same height, then you have to find ratio of their volumes. ठीक है, कंसीडर करते हैं. So using the given formation कुछ इस टाइप का रहेगा. It will be a first right circular cone, this will be the second right circular cone. What is the common thing between them? That they are of the same height, but R1 and R2 अगर आप करते हो consider, then R1 upon R2 कुछ आपको 2 and 3 दिया. We have to find the ratio of their value. मतलब V1 upon V2 आपको करना था find. Okay, so consider करोगे R1 and R2 respectively. So R1 upon R2 is given as 2 upon 3, and we have to find the ratio between volume. So we know that V1 upon V2. But आपका volume का formula क्या मिलता है देखो. Volume of a right circular cone is nothing but 1/3 of pi r square h. So हम लिखते हैं V1 आपका बन जाएगा 1/3 into pi into instead of r we'll put r1 square because हम फर्स्ट कोन के बारे में बोल रहे हैं. एंड h दोनों केसेस में सेम रहेगा, ये आपको पता था. सो 1/3 आपका हो जाएगा कैंसिल बिकॉज स्केलर क्वांटिटीज है. सिमिलरली h भी हो जाएगा कैंसिल एंड pi एज वेल बिकॉज ऑब्वियसली 1/3 एंड pi ये तो स्केलर क्वांटिटी रहने वाले थे. एंड इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला था दैट दीस टू विल बी ऑफ द सेम हाइट. So you will get that V1 upon V2 is just based on R1 square upon R2 square, which can be written as R1 upon R2 whole bracket square. ये जो क्वेश्चन है it is for the one marker. Okay, clearly सिर्फ आपको ये करना है. अगर R1 upon R2 आपका रहता है 2 upon 3, then we'll just substitute the value of R1 upon R2 as a 2 upon 3. So you will get that bracket square is nothing but 4 upon 9. Right? एकदम बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये. करेक्ट. यस, चिंदी टाइप क्वेश्चन. देन नेक्स्ट वन. अब थोड़ा थोड़ा आपका लेवल बढ़ता जा रहा है एंड आपको दिक्कत तब आती है जब वर्ड प्रॉब्लम पूछते हैं आपको क्लियर नहीं होता है कि करना क्या है. मतलब गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है. ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको वो क्वेश्चन इजी नहीं लगेगा. ठीक है. What length of film 3 meter wide will be required to make a conical tent
of height 8 meter and base, okay, base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching marriages and vestige in cutting is approximately 20 centimeter. मतलब अभी आपको क्या फाइंड आउट करनी थी लेंथ, बट अगर लेंथ चाहिए मतलब ये क्वेश्चन फिलअप अगर ऐसे कुछ दिखता है तो भी आप वॉल्यूम का किस तरह से लगाते हो, ये जो भी कुछ है वो सिर्फ आपको कवर करना है। अगर सिर्फ कवर करने का केस है तो फिर आप यूज करते हो सरफेस एरिया, एंड अगर उस केस में आप कुछ टोटल कितना वॉल्यूम है, टोटल कितना सकता है, इस टाइप का अगर रहेगा तो फिर आप यूज करोगे उस केस में वॉल्यूम, राइट। ओके, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फिर। See, let R be the radius, H be the height, मतलब जो आपको चाहिए जिस में चाहिए वो सिर्फ आप करोगे कंसीडर, राइट, एंड H will be height and L will be the slant। तो गिवन क्या क्या है देखो आपका, जो भी आपको ऑलरेडी ये फाइंड आउट करना था, फॉर दैट अगर आपको एरिया चाहिए देन एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू विड्थ, ये तो आपको पता होता है। तो अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो यूजिंग दैट फॉर्मूला एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू विड्थ, अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आपको एरिया अपॉन विड्थ का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सी, लेंथ ऑफ अ ट्रापेजोइड रिक्वायर्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय इट्स विड्थ। गेटिंग दिस वन, ये समझ में आ रहा है आपको? देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं हम। एरिया अगर आपको फाइंड आउट करनी है विच इज नथिंग बट जो भी आपको टेंट के लिए कैनवास यूज करना पड़ेगा वो चेक करना था, विच इज इक्वल्स टू द सरफेस एरिया। बट ऑब्वियसली अगर आपको टेंट बनाना है तो मुझे ये बोलो आपको कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, टेंट के लिए उस सर्कुलर बेस की कुछ जरूरत है भी नहीं, राइट। It means that we just have to deal with the curved surface area. So area of the canvas used for the tent is equals to curved surface area of the tent. And what is the formula for curved surface area? It is nothing but pi r l. This case you have the value of h and r only, but we don't know anything about l. But यही हमने डिस्कस किया था that it is nothing but a right well triangle। अगर right angle triangle आपके पास रहता है then using Pythagoras theorem we can say that slant height is nothing but L square equals to R square plus H square। But now we have to find the value of L, so we can use the formula as L equals to square root of R square plus H square। So we'll just put the values of R and H which is equal to 6 and 8 respectively। So you will get L as the square root of 100 which is nothing but 10। जो भी कुछ स्टेट पार्ट था वो सिर्फ इतना सारा, आगे वाला आप इजीली कर पाओगे, करेक्ट। Hence pi r l is nothing but pi is 3.14 into r is given as a 6 and l will be 10। So calculate करो आंसर क्या मिलता है चेक करो। Yes, after calculating this what will be the area of canvas which is nothing but curved surface area, आपको क्या मिलेगा ये चेक करो। Okay, so after calculating you might get this as a 188.4 meter square। So length of a trapezoid required is nothing but ये जो आपको area मिला था, just correct, but the only case is that हाँ point आपका शायद छूट गया है ना, 188.4। गुड वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आपको 10 मिल रहा है इंस्टेड ऑफ, वेरी गुड राजेश। सो विड्थ क्या दिए थे आपको 3 मीटर वाइड, तो क्लियर बोला था, इट मींस दैट वी जस्ट डिवाइड this curved surface area by 3 so that you will get its answer as a 62.8। मतलब ये रहेगा लेंथ ऑफ ट्रापेजोइड रिक्वायर्ड, बट कुछ एडिशनल quantity that extra length of a material that will be required for stitching margins
and the wastage in cutting is approximately 20 centimeter. So ये जो extra material आपको दिया था, it is in terms of centimeter, and जो आपको मिला है, it is in terms of meter. So first of all, we'll just convert this 20 centimeter into meter, which is nothing but 0.2. So the total length of Napoleon required equals to 62.8 plus 0.62.8 plus 0.2, which is nothing but 63 meter. That's it. Here have the answer of this question. If you want to take a screenshot, just go through it. Done with this? Should we go for the next question? क्लियर हो रहा है क्या? देखो, जो भी फर्स्ट थ्री क्वेश्चन हमने किए थे वो बहुत ही ज्यादा बेसिक थे, डायरेक्टली वैल्यूज आपको प्रोवाइड की थी, एंड या तो सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम ऑफ फाइंड आउट कर. ओके, नाउ यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द कैपेसिटी. देखो, जब भी कैपेसिटी का क्वेश्चन आता है, जब भी कुछ आपको इस वर्ड में बोला जाता है दैट वी आर विद विद और एनीथिंग एल्स, हमेशा आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. ओके, सो फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल with radius 7 centimeter and slant height is 25 centimeter. कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम. जो भी आपके पास वॉल्यूम का केस था वो भी कोनिकल वेसल, व्हिच इज नथिंग बट कोनिकल शेप का आपको कंसीडर करना है. सो वॉल्यूम इज नथिंग बट 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच. You have the value of r, but instead of giving you the h, perpendicular height, अब आपको दिया गया था value of l, which is nothing but slant. So first thing we have to do that, आपको h का value find out करना पड़ेगा, correct? So for the conical vessel, r is given as a 7 centimeter and l is nothing but 25 centimeter. So we know that we have to find the volume of a pore, and for that the formula is nothing but 1/3 of pi r square h. इस केस में 1/3 तो ठीक है भाई, pi is nothing but उसकी वैल्यू आपको पता होती है, and जैसे r आपको कुछ in terms of 7 मिल रहा है, so here we'll try to put pi as a 22 upon 7, so that 7 will get cancelled out. But the next part is that we have to find the value of h. So h आप find out कैसे करोगे? We know that is nothing but right angle triangle. So we can use the Pythagoras theorem, and we can say that h is nothing but square root of l square minus r square. But l square is nothing but 25 square, r square is nothing but 7 square. So h is equals to root of 625 minus 49, that is 24. If you know all the triplets of trigonometric, then clearly आप ये बोल सकते हो that if आपको मिल रहा था hypotenuse as a 25 and one side is 7, then obviously using that triplet we can say that second side will be of 24 centimeter. So now you have the value of h as well. Directly we use the formula so that we can put r as a 7, h as a 24 centimeter here. So after calculating, just try to solve what will be the answer, and you have 1 minute for it. Okay, just do it fast. जो भी कुछ डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है वो भी कैंसिल हो जाते हैं टर्म्स. देखते हैं आंसर क्या रहेगा आपका. Yes, 7 will get cancelled out, and 3 ones are 3 8s are. It means that you just have to calculate the answer 22 into 7 into 8. That's it. Okay, good. So the answer will be 1232 cubic centimeter, because ये जो भी आपको सारे डायमेंशंस मिल रहे थे वो सारे सेंटीमीटर में मिल रहे थे, करेक्ट? वेरी गुड. सो व्हाट वी हैव, आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है कैपेसिटी इन लीटर्स. सो वी नो दैट 1 liter is nothing but 1000
centimeter cube, cubic centimeter. So just divide it by 1000. So you will get the value correct. The correct value. So the required answer is nothing but required answer आपको मिलेगा 1.2321 1.232 liters. This will be the required answer. Getting this one? समझ में आ रहा है? Comparatively easy रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन. अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं. ये भी आप इजीली कर पाओगे. द ओनली केस इज दैट यहाँ पे आपको जो भी गिवन डायमेंशंस थे वो मीटर्स में थे एंड आपको किलोमीटर्स के लिए कंसीडर करना था. जैसे ही आप मीटर का किलोमीटर कंसीडर करते हो सिमिलर वे से आप जिसके लिए कंसीडर करोगे. I think you can solve these questions easily. So we'll just try to solve a bit difficult question. Okay. Yes. Here we have the next question. A heap of wheat in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Then find its volume. फर्स्ट क्वेश्चन था क्लियरली आपको वॉल्यूम के बारे में बोला था. बट द नेक्स्ट थिंग इज दैट अ हिप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवस. मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम पूछा गया है क्लियरली, राइट? देन फाइंड इट्स वॉल्यूम. सेकंड चीज क्या है देखो, इट इज कवर्ड बाय द कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन. तो अगर रेन से आपको करना है प्रोटेक्ट तो कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा या टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा. व्हाट डू यू थिंक? मींस CSA consider करोगे या TSA consider करोगे? What do you think? फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही क्लियरली पूछा गया था, वॉल्यूम फाइंड आउट करना था. सेकंड क्या है देखो, आपको जो भी फंक्शन के लिए आपको कैनवास का यूज करना है. सो वी नो दैट अगर आपको कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो आप वॉल्यूम चेक करते हो. बट अगर कवर्ड करना है तो फिर आपको एरिया लेना होता है. बट फॉर दैट एरिया आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं. Either you can use the curved surface area or you can use the total surface area. What do you think? What we have to use? Curve, total. So, why? We'll just try to find out what will be volume of it. So, diameter is given as a 10.5 meter, hence radius will be 5.25 meter and height is given as a 3 meter. So we know that volume of a cube is nothing but 1/3 of pi r square h. 1/3 of pi r square h. Hence 1/3 into 22 upon 7 into pi is nothing but 5.25. So we have to consider it square into height is nothing but 3. So first of all we cancel 3 with 3. So after calculating this, yes, it is a little bit lengthy, but after calculating this, you will get its value as 86.625 meter cube. 86.625 meter cube. So the next part is that we have to find what will be okay, good meter cube, right? So now tell me that if we have to cover it from the rain, it means that obviously से ही आने वाला है ना? So आपको सिर्फ find out करना होगा उसका curved surface. That's it. So area of the canvas required is nothing but curved surface area of the conical hill. Curved surface area of the conical hill, right? And for that curved surface area, आपका formula रहता है pi into r into l. We have only value of r and h. So using the value of r and h, you can easily find out what should be the value of l again, right? मतलब slant height, which is nothing but right एंगल ट्रायंगल के लिए आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है. फर्स्ट साइड रहेगी r जो आपको मिलेगा 5.25 एंड सेकंड वन इज नथिंग बट हाइट जो आपको 3 मीटर गिवन थी. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज नथिंग बट पाई आर एल. बट फॉर दैट l की जगह पे आप क्या यूज करोगे? l इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. Getting this one? So we'll just try to solve it here. So area of the canvas required
is nothing but square root of h square plus r square, that is 3 square plus 5.25 bracket square. So 3 square is nothing but 9 and 5.25 square अगर आप consider करोगे. So always remember that whenever there will be 5 at the unit place. So instead of 5.25, we'll just consider 525 here. Okay. Whenever there will be 5 at the unit place, then how can you find its square? We know that there is 5 at the unit place. So for that, you will just put 25. And for the remaining term, so instead of 5, आपको कुछ मिलेगा यहाँ पे 52. So what can you do here? You just have to consider the next term of 52, nothing but the consecutive. नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा 52 के बाद आता है 53. So for this you just have to calculate this one, means you to find the value of 52 into 53 into getting this one. बट ये ट्रिक आप कब यूज कर सकते हो? अगर आपके पास जो रहेगा there is a 5 at the unit place. So considering 52 into 53, you will get something 2756. But we have 5.25. It means that for the original case, we have decimal at this point. That is 5.25. So for the original case, decimal के बाद अगर आपको 2 digit मिलते हैं, then after considering square, we have to put decimal point the side. Okay. So ये बन जाएगा कुछ आपका 5.25 का square. We just have to add 9 into it. तो ये आपको कुछ मिलेगा इससे. समझ में आ रहा है क्या? देखो क्लियर हो रहा है पूरा ये. So L का वैल्यू आपको क्या मिलेगा? L is nothing but this. So it is equal to square root of this, which is equal to 6.0467. Hence, area of the canvas required is nothing but this. ये जो आपको L का वैल्यू मिल रहा था, you will just put the value of L here. That's it. So 22 upon 7 into 5.25 into 6.0467. I know that these calculations are little bit lengthier, but I hope you are getting the actual term. तो find out क्या करना है ये आपको समझना है. एक बार अगर proof क्लियर था, then आप easily solve कर पाओगे आगे का केस, right? So after calculating this, you can try it for the lecture, but that area of canvas required will be 99.77 meter cube. If you want to take a screenshot, you can take it. The trick and out की थी that if you have to find the square of any number which contains 5 at its unit place, so always remember this one. 5 के लिए आप 25 लिखोगे and the remaining term. Yes, कहाँ पे डाउट है बोलो? For which point? So यहाँ पे आपको 52 मिला था, so we just consider the next number, which is nothing but 53. Hence, calculated 53 into 52. ये जो आंसर आपको मिलेगा ये आप 25 से पहले लिखोगे and यहाँ पे 5.25 था. Pi की वैल्यू pi is nothing but 22 upon 7. That's it. कभी कभी आप 3.1 को कंसीडर करते हो, अदरवाइज आप कंसीडर करते हो 22 upon 7. Okay, so this is all up to that right circular cone. For the next part जो आपका रहेगा, it is nothing but a sphere. ये जो आप सारे 3D quantities देख रहे हो, based on it कई ज़्यादा आपको questions आते हैं. The only is that surface area के लिए and curve surface area के लिए as well as volume के लिए आपको अच्छे से formula याद रखने हैं. जो first आपने चेक किया था cuboid, cube या फिर राइट सर्कुलर कोन, इसके लिए आप लॉजिकली फॉर्म भी कर पाओगे, बट फॉर कोन स्फीयर आपको एज इट इज याद ही रखना है. ओके, सो बिफोर दैट स्फीयर का मतलब क्या है चेक करो. स्फीयर इज नथिंग बट
टाइप ऑफ बॉल, मेटालिक बॉल, या फिर आप कुछ स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हो। उसका ज्योमेट्रिकल फिगर कैसा रहेगा, अगर आप हैंड नीचे करोगे तो आपको सिर्फ सर्कल जैसे दिखाई देगा, बट इट इज नथिंग बट विल बी अ स्फीयर। मतलब अगर आपके पास बॉल है एंड अगर आप वो बीच में से करते हो कट, देन अगेन जो भी आप फेस मिलेगा इट विल बी सर्कुलर फेस अगेन। इस केस में ऑलवेज सेंटर से आप उस पेयर का कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, always will be at our distance. So surface area of a sphere is nothing but 4 times pi r square. याद रखने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मुझे ये आप सिर्फ एरिया ऑफ द सर्कल क्या बोलते हो, एरिया ऑफ द सर्कल आपका रहता है पाई आर स्क्वायर, सो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4। surface area of the sphere is nothing but 4 times area of circle, and and volume of the sphere is nothing but volume के लिए क्या कंसीडर करोगे, देखो जैसे यहाँ पे है 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम मतलब क्यूबिक टर्म आपको मिलने चाहिए, 4 अपॉन 3 टाइम्स पाई आर क्यूब, ये रहेगा आपका वॉल्यूम। जो भी अब तक हमने फॉर्मूले देखे शेयर से पूरे नोट डाउन करो एंड जस्ट ट्राई टू इट मेनी मोर टाइम्स। जब तक आपको रिकॉल नहीं होते तब तक आपको वो करते रहना सारे फॉर्मूलेस, करेक्ट? ओके, so volume of the sphere is nothing but 4 upon 3 times pi r cube. अब आपको ये फाइंड आउट करना था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। मतलब अगर आप चेक करते हो सरफेस एरिया का जो भी कुछ है वो सिर्फ पाई के टर्म में रहता है या फिर आर के टर्म पे रहता है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपका रहेगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ अ सर्कल व्हिच इज नथिंग बट 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, बट इन दिस केस value of diameter is given to us, so the only part is that using diameter try to find out what will be its radius. Radius will be 21 upon 2 which is nothing but 10.5 centimeter, correct? So we have to find the value of pi r square. Again you can use that short trick, okay? Here 4 का value रहेगा आपका 4, then pi is nothing but 22 upon 7, and आर का वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, आर इज नथिंग बट 10.5। तो सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को कर दो आप इग्नोर आदित्य को, एंड थैंक्स फॉर दैट नेम, ओके ओके। सो 10.5, सो 10.5 के लिए आप क्या कर सकते हो, देयर इज 5 एट द यूनिट प्लेस, सो 5 के लिए आप 25 लिखोगे। आपके पास 10 था, सो 10 का नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा आपका 11। So what we have to consider, सिर्फ आपको चेक करना है यहाँ पे ये नंबर क्या है। 10 into 11 is nothing but 110. So originally आपको सिंगल पॉइंट मिल रहा था, so after considering square there should be 2 digits after the decimal point. There should be 2 digits after the decimal point. Okay. Hence you can write this as, yeah. So after calculating this, तो easily answer मिल जाएगा which is 1386. Aditya, just check करो एक बार, that what should be that unit place. The answer should be 1386. Yes Rajesh, calculate किया आपने? Are you getting what will be the surface area of sphere here? Okay, so for now we have another type of question. Again ये भी question बहुत ही ज़्यादा simple है, clear cut आपको dimensions दिए गए हैं and volume आपको find out करना है. So we just have to use the formula for volume of the sphere which is given as 4 upon 3 times pi r cube, correct? ये sphere ही अकेला ऐसा आपका फॉर्मूला है जिस केस में जिस फॉर्मूला में सिर्फ सिंगल टर्म आपका रहता है which is based on r only. So volume of a sphere is nothing but 4 upon 3 times pi r cube, but r आपको कुछ 6 भी ऐसे मिल रहा था, means it is a multiple of 7, so we'll consider pi as a 22 upon 7 into 3 times 0.63. Okay,
सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस आंसर क्या मिलता है चेक करो। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये कुछ आपको मिल रहा था 4 into 22 into 0.03 into 0.63 into 0.6। कैलसी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना, आपको खुद से कैलकुलेशन सॉल्व करना, ठीक है। यस राजेश, व्हाट इज द आंसर? ओके आदित्य, गुड, वेरी गुड, करेक्ट। So volume of a sphere will be 1.0476 cubic meter। समझ में आ रहा है? ये जो दो फॉर्मूला हमने देखे बहुत ही इजी थे, डायरेक्टली आपको आर का वैल्यू गिवन था, सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा आपको ट्विस्ट कर दिया है, वर्ड प्रॉब्लम है बट फिर भी क्लियर होना चाहिए। देखो, a radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 17 centimeter। A radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 17 centimeter as air is being pumped into it। मतलब जो आपका रेडियस रहेगा, रेडियस हो रहा है चेंज, आप R1 कंसीडर कर सकते हो 7 एंड R2 विल बी 17। then you have to find the ratio of surface areas of the balloon in two cases। आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर हो रहा है क्या? देखो, सरफेस एरिया का सिंगल फॉर्मूला आपके पास था जो अब तक आपने देखा है, दैट सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज नथिंग बट, बिकॉज़ ऑब्वियसली surface area of a sphere, that is total surface area of the sphere, whole sphere, and curve surface area for the whole sphere is same। नेक्स्ट आगे जाके आपको कुछ हेमिस्फीयर करके देखना है, वहां पे क्या रहेगा, कैसे फाइंड आउट करना है हम देखेंगे। बट बिफोर दैट इस क्वेश्चन पे देखो R1 R2 आपके पास थे, तो फिर आपको रेशियो फाइंड आउट करना था सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन टू केसेस। इनिशियल केस का जो भी आपका रेडियस रहेगा, we'll take it as a 7 centimeter, that is R1 will be 7 and R2 will be 14 centimeter। So if we have to find the ratio of surface area, that is 4 pi r square, consider क्या करोगे, देखो ratio of the sphere is nothing but ratio of their surface areas will be first sphere का surface area divided by second sphere का surface area। तो 4 times pi तो as it is आपका same रहने वाला था। We just had check what about that r1 square upon r2 square, because 4 pi will get cancelled। So R1 square upon R2 square. So already you have the values for R1 and R2. That is 7 square upon 14 square. So 7 ones are 7 to the 7 ones are 7 to the. So you will get that ratio of their surface areas will be 1 as to 2। Final answer, final statement जो रहता है, it carries half marks, okay? So don't forget to write it. Hence, the required ratio of their surface areas will be 1.1 as to 4। Done up to this? What is the area of question? Fine. So the next one. So in this question, the volumes of two spheres are in the ratio 27 as to 64। मतलब directly आपको volume का ratio दिया है। Then find the radii if the sum of the radius is 28 centimeter। That is V1 upon V2 का value आपके पास है and you have the value of R1 plus R2। So the only case is that you have to find, करेक्ट, फाइंड द रेडिया इफ द सम, मतलब आपको R1 एंड R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो देयर इज समथिंग अबाउट वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एंड वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर आप कैसे लिखते हो, 4/3 पाई r क्यूब। Okay, so let the radii of two spheres will be R1 and R2 and their respective volumes will be V1 and V2। So by the given condition, we can write that V1 upon V2 is same as 27 as to 64। 27 as to 64, correct? But
V1 आप यूज कैसे करोगे, बिकॉज वॉल्यूम इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब। तो V1 अगर फाइंड आउट करना है 4/3 पाई एज इट इज रहेगा, बट आर की जगह पे आप यूज करोगे R1 क्यूब। सिमिलरली फॉर V2 व्हाट यू विल डू हियर 4/3 times pi R2 cube. So 4/3 will get cancelled with 4/3, pi will get cancelled with pi. So V1 upon V2 is nothing but R1 cube upon R2 cube. So we can write this as V1 upon V2 is nothing but 27 upon 64. That is 27 upon 64 is nothing but R1 upon R2 bracket cube. Okay. So we can say that R1 upon R2 will be what we have to do. We just have to consider cube root on the both sides. Good Aditya, very good Rajesh, good one. So R1 upon, we just have to consider the cube root, so that R1 upon R2 will be 3/4, and we can take that suppose x will be the proportional constant, so R1 will be 5 x, R2 will be 4 times x. So by the given condition, the sum of their radii is 28, that is R1 plus R2, which is nothing but 3x plus 4x, that is 7x will be 24. Hence value of x will be 4. So using this and this statement, we can say that R1 equals to 3x, but x is nothing but 4. So R1 will be 12 and R2 will be 16. Correct. Very good. समझ में आ रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस? इजी है, बट सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले स्पीयर ही आपको पता है, उसके बाद ये फॉर्मूले देख रहे थे, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट व्हेन देयर विल बी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस चैप्टर इन योर एग्जाम, वो आपको हिंट नहीं देने वाले, ना कि वो आपको बोलने वाले कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये यूज करना है, तो उस टाइम पे क्लिक होना चाहिए। ओके, सो अगेन वन मोर क्वेश्चन इज देयर। इस केस में भी आप क्लियरली कर सकते हो, बट सिर्फ क्वेश्चन देख के आपको समझना है दैट अगर स्फीयर से रिलेटेड कुछ आपके पास है तो आपको वॉल्यूम यूज करना होगा या फिर सरफेस एरिया। देखो, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। अगर कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है या फिर आप उसमें कुछ सब्सटेंस करते हो तो हमेशा आपको वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ता है, राइट? सो आपको जो भी क्वेश्चन दिया था वहां पे सिर्फ वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, बट फॉर वॉल्यूम आपको रेडियस फाइंड आउट करनी होगी। एंड गिवन दैट diameter of a spherical capsule is nothing but 3.5 mm, so radius is nothing but 1.75 meter. So obviously medicine needed for its filling, it means that आपको volume find out करना है, and volume of a sphere is nothing but 4/3 pi r cube, that is 4/3 times 22/7 into 1.75 cube. Calculations करो, आंसर क्या मिलते हैं? Try to do the calculations. Yes, the answer should be obviously it is approximately good. चलेगा, 22.46 millimeter cube approximately. This will be the answer. Getting this one? समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो? Good, right? Very good. Correct. Okay. It means that हम सिर्फ जो आपके पास का केस था उसका यूज कर रहे थे. That's it. So now the next question is, yes. Here we have the next question. 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted from a sphere with the surface area s1. Means for this case,
आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिल रही, जस्ट a general type of question उसमें से solve करना. So radius R1 of the new sphere, and we have to find the radius R1 of the new sphere and ratio of S and S1. S is nothing but जो आप 27 solid iron spheres form करने वाले हो, उसके लिए आपको रेडियस मिलेगा r and surface area will be s. From a sphere with surface area s1 means जो ओरिजिनल आपके पास स्फीयर है उसका सरफेस एरिया आप कंसीडर करने वाले थे s1. Okay, see. Whenever an object is melted into another, obviously their volumes are equal. Volume तो same ही रहेगा both cases में. तो आप कंसीडर क्या कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ ए 27 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस r जो आप फॉर्म करने वाले थे इक्वल्स टू जो आप न्यू स्फीयर फॉर्म करने वाले हो ऑफ रेडियस r1. So volume of a 27 solid spheres of radius r is same as volume of a new sphere of radius r1. We know that if we are talking about spheres, then obviously for volume या फिर surface area, that formula is based on radius only, right? So we at case, so 27 into this is equal to r1. But we know that volume of a sphere is nothing but 4 upon 3 pi r cube. Hence, 27 into 4 upon 3 pi r cube is same as 4 upon 3 times pi into r1 cube. So 4 by 3, 4 by 3 will get cancelled, pi will get cancelled, and you will get 27 into r cube as a r1 bracket cube. But we know that 27 is nothing but 3 cube. So 3 cube into r cube, we can write it as 3 times r bracket cube, or considering cube root on both sides, you will get r1 as a 3r. It means that जो भी आपका new sphere रहेगा, आदित्य very good, जो भी आपका new sphere रहेगा, its radius will be 3 times of the original. So r1 equals to 3 times of r. Means first जो आपको find out करना था वो तो हो गया done. अब सिर्फ आपको चेक करना था सेकेंड केस, दैट इज रेशियो ऑफ एस एंड एस1. बट एस इज नथिंग बट जो आपके पास ओरिजिनल थे स्फीयर उसके जो भी कुछ सरफेस एरिया रहेगा डिवाइडेड बाय एस1 इज नथिंग बट सरफेस area of the new sphere. But whatever it is, we know that formula for surface area of the sphere is 4 times pi r square. Hence, S1 upon S2 is nothing but S1 मतलब original one, तो उसके लिए आप R put करोगे, and sorry S is nothing but the original one, so for that we put R only, and for S1 you will put R1. Hence S upon S1 equals to 4 pi same रहेगा, 4 pi same रहेगा, so the answer will be only R2 upon R1 bracket square. But we know that R1, Rajas, good, very good, Aditya, very good. R1 is nothing but 3 times R, hence R square upon 3R bracket square. Correct? So we know that R square upon 9 times R square. So it gets cancelled. Then the ratio will be 1 as to 9. Whenever they will ask you to find the ratio, आपको इसी फॉर्म में लिखना है. There is no need to calculate this. Okay? So the ratio of S and S1 equals to 1 as to 9. Getting this one? Clear हो रहा है क्या देखो? If there is a question related to sphere, that is easier one because it takes the value of R. Hence, first जो आपको R1 find out करना था, it will be 3 times R. And the second question, that is the ratio between S and S1, will be 1 as to 9. Okay. Now there is another twisted type of question. थोड़ा सा टफ लग सकता है अगर क्लियर नहीं होगा तो क्या करना. See, a right circular cylinder just enclose just encloses a sphere of radius r. मतलब कुछ इस टाइप का रहेगा. Then find surface area of the sphere, curved surface area of the cylinder, and ratios of the areas obtained in one and two. Again,
We don't have any numerical value for R or H or anything else. But given condition is that a right circular cylinder just encloses a sphere of radius R. It means that आपको consider क्या करना है अगर आप ये बोलते हो that radius of the sphere will be R, then we can say that directly आपको क्या मिलता है check okay. The radius of a sphere will be r. Then obviously surface area of the sphere will be 4 times pi r square, right? But curve surface area of the cylinder अगर आपको find करना है, curve surface area of the cylinder के लिए formula क्या रहता है आपका 2 times pi r h, ओके. सिलेंडर के लिए जो भी आपका कर्व सरफेस एरिया रहता है भूल गए ना लास्ट टाइम हमने देखा था दैट इट इज नथिंग बट इसकी जो लेंथ रहेगी इट विल बी सर्कमफरेंस फॉर अ सर्कल एंड हाइट. सो वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर अगर आपको फाइंड आउट करना है इट मींस दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर 2 टाइम्स पाई आर एच. नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर के लिए आप यूज क्या कर सकते हो देखो. Since the right circular cylinder just encloses a sphere, it means that radius of the sphere will be equal to radius of the cylinder जो हम कंसिडर कर रहे थे r. क्यों ऐसा? Because just encloses इस टाइप से आपको दिया गया था, right? So we can consider that radius of the cylinder is same as the radius of the sphere, which will be r. So now we have the value of r. So that what will be that length? जैसे आपने रेडियस के लिए कंसीडर किया, अगर आप हाइट के बारे में डिस्कस करोगे दैट स्फीयर जस्ट क्लोजेस दैट दैट इट मींस दैट जो भी आपको लेंथ कंसीडर करनी है या जो भी आपको हाइट कंसीडर करनी है, हाइट ऑफ अ स्फीयर इज सेम एज हाइट ऑफ अ सिलेंडर. height of a sphere it's same as height of a cylinder, but height of a sphere का मतलब क्या रहता है? ये अगर center रहेगा then 2 times r. So we can say that height of a cylinder is same as diameter of a sphere, which can be written as twice r. Okay, so for curved surface area of a cylinder जिसका formula रहता है 2 times pi r h. Now we have the value for r as well as h, which can be written as 2 times r. As height of cylinder is twice r, hence we'll replace the h by twice r. Hence you will get the curved surface area of a cylinder will be 4 times pi r square. फर्स्ट से आपको डायरेक्टली सरफेस एरिया मिलता था, सेकंड से आपने कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया. ओनली आपने चूज क्या किया यहाँ पे जो r रहेगा r will be same and height of the cylinder is same as diameter of the sphere. Therefore, ratio of their areas will be surface area of the sphere, which is nothing but 4 pi r square, and curved surface area of the cylinder, which is nothing but again 4 pi r square. So that ratio will be 1:1. That's it. So it is all about the sphere. The last part is nothing but हेमिस्फीयर. जो भी कुछ आपने स्फीयर के बारे में कंसीडर किया था वो सब आपको हेमिस्फीयर के बारे में कंसीडर करना है, which is nothing but आपके पास जो भी स्फीयर रहता है we are just cutting it into the middle part. हेमिस्फीयर is nothing but half sphere. बट अब इसके लिए आपको सरफेस में टू टाइप के मिल सकते हैं. देखो अगर आप एडिटिव स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं इट विल बी अ कर्व स्फीयर. But if you will cut it into the middle part, then it can into two hemispheres, right? तो ये कुछ इस टाइप का रहेगा आपका. मतलब यहाँ पे आपको फेसेस कितने मिल जाएंगे जब आप स्फीयर के बारे में कंसीडर करते हैं. देयर वाज ओनली वन फेस, उसके लिए कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया आपको सेम ही मिला. बट अगर आप हेमिस्फीयर कंसीडर करते हो विथ रेडियस r, then I can see there will be total two faces. फर्स्ट जो आपको मिलेगा ये ऐसा कुछ स्फीयर का पार्ट which is nothing but that curved part, एंड जो सेकंड आपको फेस मिल रहा था it is nothing but the circular one. यस हम नेक्स्ट 10th का भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप इस चैनल पे देख भी सकते हैं. सो फॉर दैट हेमिस्फीयर हम सब कंसीडर करते हैं. So we know that there will be total two faces. One is the curved surface. अगर curved surface आपको मिलता है
तो फिर आपके पास कर्व सरफेस एरिया भी मिलना चाहिए. But curved surface area of a hemisphere is nothing but as a hemisphere is a sphere. तो फिर curved surface area के लिए आप क्या करोगे? 1/2 of surface area for the sphere. Surface area of the sphere हम ले रहे थे 4 times pi r square. So 4 times pi r square upon 2 is nothing but CSA, that is curved surface area for hemisphere. Okay. Now, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या रहता है? टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट जितने भी फेसेस आपके पास है उस सब का एरिया आप कैलकुलेट करोगे. तो कर्व सरफेस एरिया को आपको मिल रहा है. यू जस्ट हैव टू ऐड द एरिया ऑफ द सर्कुलर फेस व्हिच इज नथिंग बट आपको कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस कंसीडर करना है. कर्व सरफेस एरिया अभी हमने फाइंड आउट किया था which is nothing but half of surface area of the whole sphere, जो आपको 2 pi r square मिलेगा. And we know that area of circular surface is nothing but pi r square. So after equating this, you will get the total surface area of a hemisphere as a 3 times pi r square. देखो याद रखने के लिए बहुत अच्छा है ना. स्फीयर का टोटल रहता है 4 pi r square. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर रहेगा 3 pi r square and only curved surface area of the hemisphere will be 2 pi r square. Getting this one? Now, the next one is nothing but volume. So again, volume of a hemisphere is equals to half of volume of sphere. Volume of sphere आप consider कर रहे थे 4 upon 3 times pi r cube. We know that volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube. So you just have to divide it by 2 so that you will get volume of a hemisphere as 2 upon 3 times pi r cube. Goal. देखो, if you will see each and every video of this chapter, you will easily get it. But instead of that, अगर आप clear line पे check करोगे, जब भी आपको capacity check करनी या फिर कुछ substance आप feel कर रहे हो, इस type के जो भी question रहते हैं, हमेशा you have to go with the formula for volume. And whenever there will be question of covering of something, then always you have to use the formula for area. Okay. See, now we have this question. A hemispherical ball made of brass has an inner diameter 10.5 centimeter. Then find the cost of tin plating on the inside at the rate of something, whatever it is. Question क्या दिया है? तो आपको टीन प्लेटिंग. तो अगर प्लेटिंग का केस आपको कंसीडर करना है, मतलब ये एरिया रिलेटेड रहेगा. आप प्लेटिंग से कवर करने वाले थे एंड वो भी आपको बताना था सिर्फ इनसाइड का केस. ओके. इसका रेट कुछ आपको दिया गया था 16 rupees per 100 square centimeter. So as we have that diameter is given as 10.5, it means that value of r will be d upon 2, that is 5.25 centimeter. So cost of tin plating is nothing but जो आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले रेट ऑफ प्लेटिंग जो आपका रहेगा इनटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल, है ना. कर्व सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करना है बिकॉज क्या बोला था, हेमिस्फेरिकल बाउल था एंड वो भी आपको साइड प्लेस में कंसीडर करना था. Right? So we can consider here that curved surface area of the hemispherical ball आपको करना है fine, but we know that curved surface area of a hemisphere is nothing but total surface area of a sphere divided by 2, that is 2 pi r square. So 2 into pi will be 22 upon 7 and r square is nothing but 5.2 pi into 5.2 pi. If you will get it, just हमने ये पूरा स्क्वायर क्या मिलेगा हमने कैलकुलेट किया था, राइट. So we can say that I think for the third best question. So curved surface area of a hemisphere will be 173.25 centimeter square. Means now you have the value for curved surface area. अगर आपको cost find out करनी, then we just have to multiply it by the rate of plating. Hence, cost of a tin plating equals to rate of a plating into curved surface area of the hemispherical bowl
that is 16. देखो for 100 centimeter square 16 rupees. But at that 173.25 again for this what can you use here? If they are talking about जो centimeter square आपको मिल रहा था just go through it. If they are talking about 100 centimeter square, then its cost will be 16 rupees. But now we have to find about 173.25. So what you will consider here? You just have to use two arrows. The first one is the cross one, which will be for multiplication, and second one will be for division. Are you getting this one? It means that what you have to consider here 16 into 173.25 upon 100. Getting this one, which is same as 16 upon 100 into 173.25. So after calculating this, you will get its answer as a 27.72 rupees. That is decimal point का देखो जरा राइट पार्ट क्या हुआ? Maybe divided by 100 करना भूल गए क्या? Just check it once. So the answer should be 27.72 rupees. गेटिंग दिस वन समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो रहा है? जो लास्ट पार्ट है भी आपको ऐसा लग सकता है दैट देयर आर मिनिमम फॉर्मूलाज, बट इफ यू विल चेक दैट स्फीयर एंड हेमिस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन करना ज्यादा इजी पार्ट है हमेशा आपका. ओके सी a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume Then find the volume of iron used to make the tank. करते हैं. Hemispherical tank आपको form करना है of iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, means जो first आपको दिया था वो in terms of centimeter था, second वाला कुछ आपको मीटर में देना है. It means that put the check करना. Then find the volume of iron used to make the tank. Find. See. Capital R will be the external radius and small r will be the internal radius for the hemispherical vessel. Because inner radius ऐसे clearly आपको बोला गया था, right? So small r is nothing but 1 meter. Inner radius is given as 1 meter, and thickness of a vessel is 1 centimeter. But again we have to convert it into meter. So can write this at 1 upon 100, which is nothing but 0.01 meter. So now you have that thickness and inner radius as well. But we know that outer radius is nothing but inner radius plus thickness of it, right? That is capital R is nothing but small r plus b. Hence value of capital R will be 1.01 meter. Now, the iron will be only in the hemispherical bowl, excluding the inner hollow part, right? ऐसा क्यों? Because iron used to make that tank. ये आपको find out करना था iron sheet का जो केस था. That is, we have consider this one. Volume of iron used is equals to outer volume minus inner volume. मतलब आपको जो बनाना था hollow type का था, correct? जो भी आउटर पार्ट है वो जैसे आपके पास बाउल रहता है वो बाउल जैसे दिखाई देगा. सो ऑब्वियसली अगर आपको वॉल्यूम चेक करना है तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम आप कंसीडर करोगे. सो आउटर वॉल्यूम के लिए आपको आउटर रेडियस का यूज करना है, इनर वॉल्यूम के लिए आपको इनर रेडियस का यूज करना है. दैट्स इट. जो आपका फॉर्मूला रहता है वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज नथिंग बट 2 upon 3 times pi r. वो फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा. The only case is that outer volume के लिए आप outer area का यूज करोगे, inner volume के लिए आप inner area का यूज करोगे. So 2 upon 3 pi capital R cube minus 2 upon 3 times pi R cube. So we can take 2 upon 3 pi R common from it. So R cube minus R cube. But we know that capital R was something 1.01 and small r is nothing but 1. So we can write this as 2 upon 3 times
pi into 1.01 cube minus of r cube, that is 1 cube. So 2 upon 3 into 22 upon 7 into 1.01 cube minus 1 cube. So this is nothing but 1.01 cube will be 1.03031 minus of 1. So you will get its final answer as something like this. That is 0.06348 meter cube. If you want to take a screenshot, just go through it. Okay, so this is all for today. Today's session, we have covered that right circular cone as well as sphere as well as hemisphere. Okay, so each and every formula अच्छे से रखो and question देखो, जितने भी question हमने किए हैं each and every question अगर आप logically clear हो जाएगा, then you can solve any type of question based on this. Okay. Fine. So see you on the next Tuesday with the new chapter. Bye bye.